So welcome back to the Karshan FS show. We had a short episode, the last one, because we kind of lost the connection. We're back. This is season 3, episode 7. Working title, but यार बताएं कि आपकी क्या सोच है कि what's the plan? मुझे भी यार पता नहीं वैसे सोचें तो ना क्योंकि पहले अक्सर मुझे लगता था कि लोग पैसे के लिए काम करते हैं and that's true for most people still. The main goal of working is to make money to pay the bills. But the more people I've met, especially like high income earners, I start to see that many of them have already made, but they still go to work every day, and they still like give it their 100%. Often they give it more than their 100%. True. Am I losing you, man? You still there? Apologies, we are having a bad day with the connections. Again, the episode kind of ends if I don't keep talking, so apologies for you having to hear all this. Yo. Apologies, I don't know whose fault this is, but हम ज़बानी पर इल्ज़ाम लगाते हैं. But नहीं कोई मतलब नहीं. मैं आपको यार वैसे वापस can I call you back on WhatsApp? Yeah, जो आपकी मर्जी भाई, मुझे घंटा फर्क पड़ता है जो भी है. चलें सही. I'll just call you back there. All right. To anybody who's listening, please do not call me. जी. Yo. की हाल है? बढ़िया तुसी बताओ. जी बताओ हम कहाँ थे? Bro, about money and early retirement. जी. तो हाँ यार ऐसे मैं बहुतों से मिला हूँ जिनके पास it's obvious that they come from wealth, or they've already amassed a lot of wealth. Right. But they still go to their jobs every day. They still and there might be many reasons for that, but I think a big thing is it gives them a sense of purpose. It keeps them active and mentally sharp and healthy. यार आप इन बंदों को ADHD support groups में तो नहीं मिल रहा है सही? नहीं यार पता नहीं, पर ऐसे लोग होते हैं यार, आप भी मिले होंगे ऐसों से कि they definitely don't need to work, but आईना they में still देखता हूँ इस बंदे को. But मुझे अभी भी याद है यार एक दफा ना it was my 4th year of uni, and I was taking a security analysis course. Nice. It was pretty interesting stuff. The guy teaching it, he was he was a former fund manager. Oh, nice. I think he was one of either the senior analysts or the fund manager himself. Right. And he was managing the team was managing $2 billion in assets. Oof. Nice. And I remember him saying, man, the people who were the heads of the fund were the partners of the firm. They were making 10 to 15 mil a year. Nice. USD. Nice. But he was they would still come to work every day, and and he asked them once, why do you guys do this? You've obviously made enough that you can just chill your whole lives and you can spend whatever on anything, and you'll be fine.
but I think with them it was like they became wedded to their profession, where Yeah. that's how they started to see themselves when they looked in the mirror. यार वाकई like में they saw. इंसान को मकसद होना ज़रूरत है यार, कि पैसे के अलावा भी कोई मकसद होने तो ज़रूर लाजिम है. यही बात है. I think that's why even if I think I got like a windfall of like let's say like a huge amount of money, like enough to just chill fat for like the next 5 to 10 years, Yeah, let's say 30 million, yeah. Okay, that's not. Well, I don't think it would make a huge difference in my life. I would probably continue to live the way I do. Do you know, like I've read this a lot on Reddit, कि even in our like weird dreams, yeah, जब हम ये बातें कर रहे हैं, we're not talking about winning the lottery, and the other kind of people are the ones that want to win the lottery. They want to stop doing everything. उसकी मकसद ही नहीं है. They just want the money. और ऐसे लोग they blow it all and they end up where they used to be. And हम यार हमें फर्क ही नहीं पड़ता. We do the same thing despite what's in our banks. बिल्कुल यार, ऐसा हुआ भी है बहुत लोगों के साथ, like amassed a fortune and then just blown it all away. Yeah. And even like finance people, man, like so many like traders and like Wall Street people have like gone bankrupt. Many rappers and producers as well. Like I'm always surprised how someone making like millions of dollars a year can ever go bankrupt, Yeah, I think my first exposure to this was 50 Cent. Oh, did he go bankrupt? Yeah, back in 2006. No way. But then, man, he made a huge comeback with the vitamin water. He did. He made more from vitamin water than he did from his whole rapping and producing career. This goes back to capitalism, doesn't it? I mean, at the end of the day, we're all snake oil salesmen. That's true, man. Honestly, that's so true. Yeah. What is vitamin water, right? Like, hote kya hai? Like, we'll be Curtis Jackson. Yeah, what a guy. Yeah. आधे रुपए के बंदी नहीं है. Oh my god. मगर यार बताओ. But yeah, man, I don't think. Yeah. I think it would be like Emma Watson for me too. It probably wouldn't change much. Like I cannot like come to terms with कितने इस बंदी का असर पड़ता है हमारी जिंदगी में. If anything, I would probably go back to uni, man. I would probably go back to school to study things that I find interesting, Dude, I'd love to do that. I'd love to go to a community college. Yeah, man, definitely. Those classes can be like dirt cheap and and you get the same like education there, I already have one question. Like, would you start a study group to date a blonde? Oh man, that'd be interesting, dude. Maybe yeah. It would be like not getting the reference. That's a community reference. We're not single. Yeah. I honestly like Allison a lot more, Yeah, मैं आजकल ये बातें खुल्लम मतलब क्या कहते हैं मनमानी से या रज के तो बता नहीं सकते, मगर एक ज़माने था जब मैं सिंगल था और मुझे यार खूबसूरत लगे थे एलिसन, मगर मुझे पर्सनालिटी पसंद आए थे बैगल के. ये बात तो है यार, and she is hot, ये बात तो सच है, मैं तो आजकल ये बता नहीं सकते मगर शायद. But ये भी एक ज़माना था. I think we all had a crush on some of these girls growing up, the girls we saw on TV. Dude, I'm always Hillary surprised Duff, by for sure. how old Alison Brie is. I always thought she was our age. She isn't. How old is she? She's 40. What? Yeah, that's buddy. Insane, man. Yeah. Which means, man, J-Lo is probably like in her mid-50s now. Yeah, that is true. She is. और Alison Brie जो हम मतलब हम सफर नहीं मगर क्रश मानते थे, वो तो खाला निकली भाई.
यार, she's like an auntie, you know. जी आंटियत की काफी निशानियां आजकल नजर आ रही हर बंदी में यार कि छोटे नहीं, छोटे बच्चियों से हम तो ताल्लुक नहीं रखते, जो हमारी उम्र की है उस पर पूरी निशानी आ गई। और सिर्फ बाकी और जो ज़िंदगी में है ना खाला पोपो, उससे तो हम नाराज़ हैं। तो उसके अलावा सिर्फ एक बंदी है जो जो यार अलाइव है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं नज़र आता। नहीं यार, ये हमारी मतलब शायद बदकिस्मती भी है कि you know, even at our age we look a lot younger than we are. हाँ भाई। So तो हमारी उम्र की जो औरतें हैं वो तो अब आंटियत के करीब पहुंच रही हैं, जी पर खातून है। हम अंकलियत के दूर नहीं पहुंचे, you know, हम अभी भी जवान है देखने में और फीलने में। जी तो जी। मुझे यार मैं एक बात फिर पूछूं कि मुझे हमेशा ये सोच जहन में रहता है कि इज इट एम आई नॉट लुकिंग मोर मैच्योर, बिकॉज मेरी मैच्योरिटी की कोई चीज़ें नहीं आई ज़िंदगी में, कि जिम्मेदारी हमारे यार कम थे। द गाइस हु हैड लाइक 14 had thick beards and they looked like they had a family to support। वाकई में उसकी थी भाई फैमिली सपोर्ट करना है। तो उसको पता वो तो नहीं टीम भी सपोर्ट नहीं कर पा यार वाकई में हम इतने सेल्फिश बंदे थे कि वाकई में कि जब हम खेलते भी थे हम सिर्फ अपने स्टैट्स को याद करते थे भाई, हमें एक घंटा फर्क पड़ता कि टीम हारा या जीत गया, हम सिर्फ अपने देखते थे। मगर यार मुझे आज भी ये शक है कि डू वी लुक यंग बिकॉज वी डोंट रियली हैव ओल्ड पीपल प्रॉब्लम्स। यार मुझे भी वैसे काफी हैरानी होती है क्योंकि हमने जो जिंदगी में फैसले लिए हैं, जी you know, you would have thought that we यार would ये भी कह सकते हैं कि wouldn't have aged well. जिंदगी ने जो फैसला हमारे लिए ली है हमारे लिए जो जो फैसले लिए गए हैं, जी जी पर हाँ यार ये तो है इसके you would think that we wouldn't have aged well. yeah But इसके अलावा I think क्योंकि आप तो खासकर you've always been a gym rat and Yeah. like always been cared about fitness and and like sticking to a regimen as well. जी जी तो इन चीजों का तो बहुत असर पड़ता है, staying fit, not stressing out, I Yeah. think आप तो काफी यार you're like pretty easygoing. लगता और है इसके अलावा फिर a lot of it is like genetics in the end, like sometimes you luck out and you win the lottery, जी जी the genetic lottery. हमारे वालदे भी उतने उम्र की नहीं लगता है कि पीपल एक ज़माने थे जब मैं यार क्रिकेट खेलने जाता था अपने वालिद साहब के साथ, तो लोग मानते नहीं कि मैं उसकी मतलब बेटा हूँ, मानते थे कि कि छोटे भाई है ऐसे कुछ। एंड that's genuinely weird because like जब मैं पैदा हुआ था मेरे अब्बू तो 24 की था, तो हमारी एज डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं थे। और वालदा भी ऐसे ही है कि लोग मानते नहीं कि मेरी वालदा है। तो हमारे वालदे के भी वो you're right, maybe it's genetics, नहीं ये तो होता है यार अक्सर, it does make a difference. It's a combination, काफी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी जो आप जिंदगी में आपके तजुर्बे होते हैं आगे जाके, जी खासकर जो आपके हेल्थ से मुतल्लिक हैं, जी it's either like genetic or environmental. It's like a combination of genetics and environmental factors, जी जी तो हाँ यार बस इसका शुक्र अदा करते हैं कि फिलहाल तो we've been good on that front. But हाँ अभी भी यार I remember कल की बात है, I'm still like working part time like over break. तो एक जगह जहाँ मैं जाता हूँ तो किसी ने कहा था यार कि they were asking like how old I am and they guessed like 24. No way. And I'm like, that's still like a lot less than like in what I actually am. Like I'm about to turn 30 in like in a few months. Yeah. तो हाँ यार ये अक्सर होता है अभी भी मेरे साथ के especially if I'm like clean shaven.
Yeah. लोग समझते हैं कि I'm like 22 or 23. ओ भाई मैं इसलिए नहीं करता हूँ. ये अक्सर होता है यार. मतलब मैंने देखा है even when I went to the liquor store after shaving, तो they straight up asked me for ID, In fact, even when I didn't shave, they would still ask me for ID. यार मुझे ये सोच कर ही मतलब मैकलविन याद आता है कि पता नहीं उसके अलावा कुछ भी याद नहीं आता है भाई. And I'm sure कि ऐसे ही लगे होंगे. Bro, that's so funny, man. वो तो बिल्कुल clean shaven बंदा, and he still passes the ID check. Yeah. He's like, it was either McLovin or Muhammad. Dude, so many people don't get that reference कि मैं काफी नाराज हूँ. Oh, bro, I mean, it's such a good scene, It's like, what's up, gangsters? Dude, I can't believe you remember all of this. And the cops were like proper, Seth Rogen and Fred Armich, I think. Oh man, yeah, just the two goofiest guys, and they're like the. It's such cops. a good movie, isn't it? It is, man. Like that's very like American humor, the whole movie. Especially like Jonah Hill and he has a problem where he draws dicks. Dude, how do you remember this? Dicks. Yeah. Dude, वाकई मुझे अब भी याद आ गया. That's not a part of the movie that I remember. It's just so American, man. Just everything is about dicks, And it's a 2006 movie. Oh, what? No way, man. Yeah. That's crazy. Yeah, that would make sense, though, because they're really young. Like, Jonah Hill's like a little kid in that, Yeah. They wrote the script when they were 16. That's crazy. Yeah, all of them. Michael Cera, Jonah Hill. Michael Cera still looks the same. Jonah Hill also, by the way. I haven't seen McLovin after that, though. Yeah, it's sad, man. You would think that he would be in like a Hangover type movie when you get older. Exactly. It was the natural career path for him, Absolutely. The McLovin, the McLovin Hangover pipeline. Dude, he was a minor in the movie. So जब वो like the PG-18 scenes shoot हो रहे थे, his parents had to be in the room. That's so funny, man. That's such a legal loophole when you think about it. It's like he's in the movie and he's not allowed to watch it. Oh, dude, that is nice. Yeah, that's true. Yeah, man, that's so funny though. But I often think about these PG and rated R stuff. We grew up with all that. Yeah. But then it didn't really matter, we would find the uncensored version online anyway, even back then with primitive technology, LimeWire nice. and BitTorrent and all of that, we would still find the uncensored version. I'd like to apologize to my parents for the amount of viruses that I got onto the family computer back in the day. Oh, bro, I was just thinking about this yesterday. There was so many viruses on my Windows XP because of this one guy, man. Do you remember the gorilla? Yeah. The icon that you could get, the little gorilla? Yeah. What was it called again? Oh man, naam kya tha? It was it was supposed to be an online assistant जो आपकी पूरी मदद करता था आपके लिए अगर कुछ काम करना है. उस ज़माने की AI. उस ज़माने का सस्ते में AI, Yeah. यार क्या नाम था उसका bro? कल मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा था, अच्छा. हाँ यार, Bonzi Buddy. Oh yeah. No wonder we don't remember the name. It's not very catchy. Bro, but it was I watched the video with it's it had millions of views. It was clearly a huge deal. Right. And it was actually a spyware, No way.
Yeah, it's a huge virus. And ये मुझे उस वक्त पता चल गया था. I was using it a lot. And I used to love it, you know. I'm like, man, I love playing like with Bonzi, you know. It's like he's so funny and like he can like help you like access stuff on your computer, you know. Yeah. And I remember, man, eventually the computer got slow and we got it checked, you know. वो बंदे होते थे ना जो सस्ते में करा देते थे ये. They would like work in Sofitel and stuff, you know, around there. भाई मुझे पता है कि मेरी भी ताल्लुक था इसी बंदे से. ये आप सेम बंदे को जानते होगे वैसे. एक ही मतलब सॉफ्टवेयर मैकेनिक था दोहे में. Yeah, he was like the don of that industry. You know? Hacker man. के लुलु से लेके Sofitel तक सब उसके. Nice. सब जिमिन का नाम जानते थे. Nice. But no, he actually was an OG man. He was like, उसने 2 मिनट में बता दिया था कि ये the Bonzi is not your buddy, you know. Nice. कि हाँ कुछ घपला है. And he was like, yeah, it's actually the virus is in the gorilla, so you need to like get rid of it, you know. तो मेरे लिए तो it was a legit crisis back then, you know. Like I remember being like really upset about that and almost wanting to tell my dad that, you know, is there some way we can keep the gorilla but remove the virus? It's like one of those movies where you have a pet orangutan. Can we keep him, Dad? Oh my God! And the authorities are after you, yeah. But yeah, man, I saw this video just yesterday about it. You know, it has like millions of views about how like it turned out to be a spyware and like it was a huge scandal. And then, you know, they like cracked down on it and stuff. But yeah, man, it's so bad because they would know. I think they were deliberately targeting children because they knew that they would download something like that. You know, it was kind of like Barney the dinosaur. Nice, yeah. मगर यार बेरशेर भी था याद है. And like my first experience with like winning something online was if you downloaded Bearshare, it would tell you won like an iPhone or something like that. और यार सब गिरे थे उसमें कि that was like our first exposure, and from then I didn't even believe यार मेरे इतने अच्छे ज़माने आ सकते थे. तो मैंने ऐड क्लिक ही नहीं की. Maybe अच्छा किया. I mean, दोहा में तो हमारा अक्सर ये आता है कि, you know, there's hot Filipinas in your area. Dude, I was just about to say this. We never believed there were hot singles in our area. हम जानते थे सब. हम थे hot singles. कहाँ यार, बिल्कुल, you know. ऐसा कभी उस वक्त भी हमें पता था ये स्कैम है, you know. जी, ये टिंडर की कोई जरूरत ही नहीं था. हमें पता था कि यहाँ कोई नहीं. वही यार. And it gets back to that thing we were talking about, you know. ये इन सब चीजों का क्या फायदा है, you know, the rated R and the PG warnings. But हम 11 साल के होते हुए भी हम, you know, we were able to access all the stuff. हमें पता था where to find it even then with like literally caveman technology, you know. Yeah. कि मतलब आपको you had to actually know the internet to find something and then download it. Yeah. Whereas now it's just like literally a click away, you know. And I don't know. I guess it's just like it's maybe it's like for optics, you know. It's like something performative. We need to do it as a society. To show that we care about kids, but I feel like it doesn't do घंटा, you know. हाँ जी, आपको safe search याद है कि आजकल मुझे वो नजर ही नहीं आता. I want to turn it on, मगर नजर ही नहीं आता है भाई. एक ज़माने में हम ऑफ करने की चाहत में थे. हाँ नहीं अभी भी है यार वैसे. I've seen it on Google, but it's like a smaller icon और I don't think it does it by default. पहले तो अपने आप कर देता था वो. हाँ यार, and I want to turn it on. आजकल इतने मतलब क्या कहते हैं यार कि बदतमीजी आ जाते हैं सर्च पे कि मुझे नहीं चाहिए यार ये सब लिंक्स. नहीं यार, ये मैं सोच सकता हूँ.
पर मुझे याद है यार उस वक्त खासकर ऋषभ को बहुत शौक होता था सेफ सर्च ऑफ करने का भाई आपको याद है कि स्कूबी डू पहले पकड़ा हुआ था कि हमारे मतलब जिसके भी कंप्यूटर में पहला फिल्टर इंस्टॉल हुए थे वो स्कूबी डू का था बेवकूफ पकड़ गया of course bro ये तो होता ही था जी जी मुझे यार I don't know why this one memory is just it's etched in my memory right bro it's like आपको याद होगा you know back then अक्सर हमें जब कहीं जाना होता था so our parents would drop us yeah खासकर you know when we were like 12 13 कभी कभी अगर इजाजत लेते तो ड्रॉप करता सही हाँ कई बार ऐसा होता है you know and I remember once I stayed over at Keith's place nice और अगले दिन हम लोग ना मूवी देखने जा रहे थे it was like an Adam Sandler movie and we were going to City Center to watch it you know और उस वक्त आपको याद है CDs का ज़माना था you know it was like we would burn CDs for the road जी और एक दूसरे के लिए भी you know हम लोग mixtapes exactly you know तो गाड़ी में हमने mixtape लगाया था और Keith का it was Keith's CD you know so he burned the CD himself he knows like what songs are on the CD you know और ये पता होने के बावजूद वो लगा देता है सीडी और गाड़ी में पता है हम लोग बैठे हैं आगे कीथ की मदर चला रही हैं गाड़ी जी और उसके बगल में कीथ's sister is you know sitting with mom जी and पीछे हम दोनों लौंडे बैठे हैं जी और पता है मिक्स टेप लगाता है और गाना पता है कौन सा होता है It's Lil Wayne's Lollipop. No, यार ये बंदा इतने बेवकूफ कैसे निकल सकता है? जो वो उस ज़माने में you can imagine I think it was 2006. No, it might have been 2006 or 7 man. Yeah, it might have been 8 but आपको याद है कि mid 2000s में एक बड़ा चला था ये गाना you know it was getting played everywhere that and Akon's I wanna love you. Yeah, dude, like अक्सर लोगों की इसकी मकसद समझने आते थे मगर ये स्कूबी डू को पता था यार मतलब CD उसने बताई थी so he would know like what songs are on there. Exactly. And then he goes like oh Kelly can he change the song? Dude, this is why he got sent to boarding school. Oh my god. And then he hits the next song, right? Yeah. And this, I don't know if this made it better or worse. Yeah. But the next song was My Two Front Teeth. No. Oh, that definitely is not making it better. Dude, the nursery rhyme, man. And then even his mom picked up on it and she was like, oh man, what is this playlist? You know, it's like the most adult song I've heard, followed by like a children's song. यार स्कूबी डू को जानने की वजह से ना मुझे लगता है कि उसने इल्जाम आप पर लगा दी होंगे नहीं यार ये उसका क्योंकि it wasn't even the first time he got caught listening to that. What's an idiot? I think he was telling me how that had happened before, you know. तो उसकी मम्मी को शुरू से पता था कि you know यहाँ का like but his parents are chill, you know. I think they didn't care too much. Yeah, उन्हें पता था कि ये कैसे निकलेगा. ये तो है यार. वैसे काफी अच्छे निकले है बंदा. Yeah, man. I think so. You know, मतलब हम लोग उस उम्र में इतना टेंशन में रहते थे, you know, about like life, career. But I think he's a good example of, you know, to get by. Yeah. You know, I think things can work out in the end even if you just have the soft skills, you know. उसकी कौन सी soft skills है भाई? I guess like he's always been great with people, you know. That's one thing I've noticed. Like just very natural at like getting to know people and you know like True. social skills. But that's often the case with Goans. I've noticed, you know.
Like maybe it comes from like going to church every Sunday and meeting people you don't want to meet. But यार हमारे भी रिश्तेदार थे, हम ऐसे तो नहीं निकले. But yeah, Sunday वाला एक अलग सीन होता है, like हर Sunday and then काश हम Sundays को मिलते, तरक्की हुए होंगे. हाँ यार, हम तो Sunday को PlayStation. I used to play Crash Bandicoot, हाँ मैं भी, उससे क्या निकली ना. But I do think he had like good social skills, and I think those are more important than we realized at the time. Like even if you have like, good soft skills, you're a good people person, that can go a long way in your career as well. जी, it helps a lot. Like मुझे यार ये dichotomy लगता है कि if you ask me if I have soft skills, my answer is it depends on हमारी ताल्लुक क्या है. कि मिसाल देता हूँ कि मैंने जब हमारे कॉल शुरू हुए थे उससे पहले 2 बंदे से राब्ते हुए थे. एक मेरे लिंक्डइन पर मुझे मैसेज की थी कि LSE की यहाँ दोहा में एलुमनाई है, तो अगर आप मानते इजाज़त देते तो मैं आपको ऐड करता हूँ, और इफ्तार भी है हमारा, तो आप फारिग है तो आ जाओ. तो मैंने उनसे यार काफ़ी अच्छे राब्ते रखे. I was talking to him nicely, I gave him my number, told him add it, right? तो ये अच्छे सॉफ्ट स्किल्स है. सही, बंदे ने मुझे ढूंढ ली और अभी तो सब सेट हो गए. सही. और दूसरा, मेरे जो इंस्टाग्राम है कि जो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता आजकल, उसमें मैसेज आए थे जो हमारे दोस्त है जिसका वो कोरा पोस्ट है. सही. तो उसने जो मेरी पर्सनल अकाउंट है कि 40 फॉलोअर्स वाला, उसमें फॉलो रिक्वेस्ट भेजे थे. तो मैंने फ़ौरन रिजेक्ट कर ली. सही. तो उसके बाद बंदे ने मैसेज रिक्वेस्ट भेजी कि यार कैसा है, तो मैंने वो भी देखा और वो भी ब्लॉक कर दी भाई. तो सॉफ्ट स्किल्स अक्सर डिपेंड कर दे कि मैं आपसे ताल्लुक़ रखना चाहता कि नहीं. तो it's a dichotomy for me. I wouldn't say have it, I say it depends on the need. No, I mean, I would say you have it, just because, it's like you have it when you need to have the soft skill. Exactly. But obviously you want to protect your private life, and you want to keep that separate, from like people you don't know, and that's understandable, But Pippi, I didn't teach us this in school, that these non-technical skills, like they can really like make or break your life. Like so many people, they get hired just based on their personality. Like there's literally the term personality hire. Yeah. That they just are really energetic, are very upbeat, or like they're just very popular, like people like them, and that's why they have their job. They're not necessarily the best at their job, but they're very good at like influencing people. Yeah, dude, just following back into where we started before the call, कि Dale Carnegie की एक book है, How to Win Friends and Influence People, and I read this when I was in university. I got the paperback, right? And I think it might be Napoleon Hill or Dale Carnegie. I'm not sure. I think it's Dale Carnegie, right? So one of the things it says is, and like I was already in university and I had like 1,000 friends at that point. और मैंने पूरे book पढ़ ली, and literally every single chapter I was doing already. तो यार बात यह है कि how to win friends and influence people is something that we know already. और यार ये एक तो बात अच्छे soft skills है, मगर if you take it to a certain extent, it's psychopathic behavior, कुछ लोग सिर्फ socialize करने के लिए यार इतना they don't think of it as an extension of themselves. They see their social selves as a different person, and I think we do this. कि वो काफ़ी dangerous होता है. Like you establish different realities of yourself, and you have to live within those. You're always, you're not caught in a lie. You're like kind of living a different life. Like Hannah Montana की 1000 renditions होता है.
हाँ यार, ये तो आपने सही बात की है, but you know, the more I think about it, the more I feel like that's the case for everyone. Like हर बंदे की कम से कम 2 personality तो होती ही होती हैं. You know, you're never the same person around everyone you know. You know what I mean? Like, and I think it's especially true if you work across age groups or work across like cultures. Yeah. Like the person you are when you're with a 10-year-old is very different to the person you are when you're with people of your own age, you know? I like your point कि मैं उर्दू में एक बंदा हूँ और मैं पंजाबी में दूसरा बंदा हूँ, अंग्रेजी में दूसरा बंदा हूँ. बिल्कुल जी. सही में ये बात तो it's even more like meaningful, you know, because there's so many things that बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं उर्दू में कर सकता हूँ जो इंग्लिश में वो अल्फाज ही नहीं है करने के लिए, you know? मैं यार उर्दू में काफी तहजीब वाला बंदा हूँ, सिर्फ उर्दू में. I'm very disrespectful. मैं भी इसके बारे में अक्सर सोचता हूँ कि, you know, if you want to meet the best version of myself, like the most respectful, it would be like the one that speaks Urdu. I like this one. अंग्रेजी में तो ये क्योंकि अंग्रेजी में तो तहजीब होती नहीं है मेरा ख्याल है, you know, वो अल्फाज ही नहीं है अंग्रेजी में. जी और I really like what you just said because वाकई में I haven't put it into words that beautiful. But if you want to meet the most respectful version of me, talk to me in Urdu कि वाकई सच है. And अंग्रेज़ी तो ठीक है भाई कि मैं उतना भी डिसरेस्पेक्टफुल नहीं, मगर जो हमारी वाकई में ज़ुबानी है ना, मैं वो बोलता ही नहीं, घर पे भी नहीं कि यार बोलते मुझे इतना बदतमीज़ लगता है यार ये जो अल्फाज है ज़ुबानी है कि it seems like people are just insulting me, तो मैं बात ही नहीं करता उसमें. No way, dude. यार मुझे अफसोस होता है कि मैं मलयालम के ज़्यादा लफ्ज़ नहीं जानता. यार बेहतर है नहीं जाना. क्योंकि बात क्या है ना कि खास करके मैं गल्फ में पूरी जिंदगी रहा हूँ. So you think that I know at least some phrases, you know, or like क्योंकि इतने जैसे मैं लोगों से मिला हूँ who've like they've managed to learn Hindi or Urdu just from watching movies. और मैं शुरू से यार मतलब Malayalam speaking लोगों के इर्द गिर्द रहा हूँ, and even going to a school like DMIS, you know, and going to tuition classes with like जहाँ सारे MES के या IDL के बच्चे होते थे. So जी वैसे अब कौन से हम ट्यूशन में क्यों नहीं मिले भाई? यार मैंने दरअसल 11वीं 12वीं में शुरू किए थे. It was only for accounting. Oh right. तो इसलिए हमारे कोई सब्जेक्ट्स ही नहीं थे. वो यार नहीं, लेकिन मैंने 7वीं में भी यार जब मनी का मसला हुआ था, मसला है मनी. हाँ मसला है मनी. ओह नाइस. तो उस जमाने में कहाँ गए थे? वैसे उस जमाने में जाते नहीं थे, मगर यार वैसे ट्यूशन्स में मैंने काफ़ी लोगों से मिले जो यू नो हमारे फ्रेंड सर्कल की बाहर है, और यार काफ़ी ताल्लुक़ है वहाँ से मिलते, मगर मुझे अच्छे नहीं लगते. मुझे भी यार, क्योंकि ज़्यादातर हमें MES आइडियल वाला क्राउड मिलता था वहाँ, you know, who were a bit like who weren't really on the same wavelength as us, you know. ओ भाई एक बात कहूँ कि काफ़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो MES की बंदे हैं ना, मेरे एक ख़ास ताल्लुक़ है कि एक बंदा है जो हमारे स्कूल में आ गए थे 11वीं में. तो मेरे वालिदा और उसकी वालिद साहब साथ काम करते थे ऐसे. तो हमारे हम तो रिश्तेदार लाइक फैमिली फ्रेंड्स या. तो इस बंदे का अब्बू हमेशा बाहर खड़े हुए थे हमारे जो 11वीं 12वीं में इवनिंग्स में क्लासेस भी होते थे सही. एंड दैट वाज जस्ट वियर्ड मैन कि 2 बजे तक थे, फिर 4 बजे से 7 बजे तक थे. तो 7 बजे ये तो बाहर खड़े हुए थे, और हमारे वालिद साहब तो आपको पता है हमारे यू नो क्रिकेट प्रैक्टिस से ये क्लासेस तक कभी कभी आते हैं. यू नो हम मिलते हैं, उससे ज़्यादा हम घर यूँ पहुँचते हैं. वैसे अच्छी बात है. तो
मैं इनकी वालिद साहब से उस ज़माने पर मिलता था, और वो हमेशा इंटरेस्टेड था मुझ में कि उसकी बंदे का दोस्त था। ऐसे मैं ज़्यादा ख़ास ताल्लुक़ नहीं रखता था उस बंदे से, कि काफ़ी क्रिंज बंदे थे, हमेशा लड़कियों के पीछे पड़े हुए थे, और हम लड़के हमारे पीछे भागते थे, तो हमें क्या। तो यार ये अ, कौन सा बंदा? यार छोटा सा है कि 5'4" ऐसे कुछ होता है, और MES का हेड बॉय था। अच्छा यार, ये वो बंदा है तो नहीं जिसका सौंदर्य हाँ, पे वही crush था? चॉकलेट मिल्क वाला सीन। ओ हाँ, ये मुझे I know who you're talking about. जो ये बाद में he like शायद isn't he married to हाँ, ही इज मैरिड टू योर फ्रेंड, ये बड़ी यार, मिल गई यूनिवर्सेस, ना मेरे ना तेरे। यार लेकिन उसको भी पता होगा यार कि that he has a past, you know, not to judge anyone by their past, ओ but यार, ये ऐसा बंदा है जिसपे अगर आप बैकग्राउंड चेक करोगे तो the first result that pops up is, you know, you have to turn safe search on for this dude. मगर यार मैं बताता हूँ कि जो ये दोनों ना, जो आपकी दोस्त है वो बंदी, और ये मेरे दोस्त, तो मैं नहीं मानते उस ताल्लुक था, तो ये दोनों मेरी यूनिवर्सिटी में था सही। तो मेरे इसके अब्बू के भी साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुक था, और यूनिवर्सिटी में जब ये बंदे आ गई, तो ये बंदी को आपको पता है कि काफ़ी नेक रेपुटेशन है उसकी, सही। तो हमारे वहाँ एक जगह होते थे जहाँ रात पर बंदे पीने जाते थे, सही, कि ओपन एयर ऑडिटोरियम थे, और सितारे के नीचे चांद देखकर बंदे तो खुलेआम पी सकते थे, सुकून मिलता था। मुझे सिर्फ पता है, मैं तो पीते नहीं। तो वहाँ हमेशा बंदे होते थे, हाँ, रात में। तो फर्स्ट ईयर हमारे ये जो हमारे सीनियर्स थे वो वहाँ गए थे पीने, और इन दोनों को मिले, और दोनों की काफ़ी हैवी सीन चल रहा था। तो भाई मुझे सिर्फ इतना कहना है कि बंदे की काफ़ी ख़ास पास तो है, मगर बंदी भी उतना नेक नहीं निकली। तो मगर यार, जो भी, इंसान तो बदल सकता है। मैं वैसे भी उनसे ज़्यादा पसंद नहीं करता था, अभी नहीं करता हूँ। बट व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, राइट, एक दिन मेरे सीनियर्स ने मुझे पकड़ ली थी, और हेजिंग का काफ़ी सीन चल रहा था, सही। तो उसकी तो बाइसिकल होते थे, मैं और मेरे एक दोस्त थे, तो उसकी बाइसिकल थे। तो हेजिंग सब ख़त्म होने के बाद बंदे ने कहा, यार हमारे ये जो बाइसिकल्स है वो तो क्या कहते हैं कि पंक्चर्ड है, सही। तो उसने कहा, यार हवा भर कर आओ। तो हवा भरने में यार 2 माइल्स की दूरियाँ थे, कि काफ़ी मतलब विलेज सीन था हमारा, सही। तो मैं और मेरा दोस्त ये दोनों मतलब हाथ से चलाकर जा रहा था, सही। और एक गाड़ी रोक गई यूनिवर्सिटी की, मतलब जो सेंटर है वहाँ, और बंदे ने विंडो नीचे कर ली, और इस बंदे का अब्बू था। तो उसने पूछा, यार कैसे है। तो मैंने बताया कि यार ठीक हूँ, मुझे पता नहीं चला कि कौन है, कि ये क्यों मुझसे बातें कर रहा है। तो मुझे फिर याद आया कि हाँ यार, ये तो मेरे दोस्त नहीं, एक बंदे के अब्बू है। तो वो तो मुझसे बातें कर रहे थे, एंड ही इज़ लाइक, आपने कब साइकिल ले ली। तो मैंने कहा हाँ हाँ, तो बड़े बड़े कहानी है, मैं उन्हें बताना नहीं चाहता। तो मैंने कहा हाँ, अभी अभी ले ली। तो उसने पूछा क्या मसला है। तो मैंने पूछा, यार पंक्चर हो गई, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। तो उसने कहा, चल मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मैं तो दोस्त भी है, मैं चलता हूँ। तो जब ये हुआ ना, उसकी गाड़ी में पीछे उसकी बेटी थी, सही। एक छोटी सी बंदी, जो मतलब स्कूल जाने की उम्र, मतलब छोटी छोटी बंदी जो हाथ में लेते हैं ना ऐसे, मुझे लगा था ऐसे, हाँ। तो ये 10 साल नहीं, 10 साल से ज़्यादा पहले, 2012, राइट। तो मैंने सिर्फ इस बंदी को तब देखा था, सही। और मुझे पता है कि मेरी दोस्त की बहन है, सही। यार अगेन, मेरी दोस्त नहीं, सही। दिस इज रियली थिंग आई वांट ऑन द रेकॉर्ड, इज नॉट माय फ्रेंड। तो वैसे तो हम एक ही एलुमनस का है, हम स्कूल एक गया था, यूनिवर्सिटी एक गया था, और हमारे काफ़ी म्यूचुअल्स है कि हम दोहा से ही है, सही। और मैं ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखता उनसे, मगर मेरे नंबर जैसे मैंने कहा भी था कि ये जो बुरी हरकत वाले लड़की की नंबर जैसे हर बंदे के पास होता है। तो उसकी मैसेज आया था
दो हफ्ते पहले या ऐसे कुछ। और उसने पूछा कि यार की हाल है, और मुझे पता है कि ये मैसेज आते हुए दिस इज़ ट्रबल। तो मैंने कहा यार सब खैरियत, आपकी बताओ। तो उसने कुछ ना कुछ कहा। तो उसने कहा कि यार आप रिश्ते ढूंढ रहे हैं। तो पता है क्यों पूछा? और ये शर्मिंदगी की बात है कि ये जो छोटी बच्ची थी ना, उसके लिए पूछा था। और मैंने फ़ौरन कह दिया कि यार इतना समझो कि मैं भी ढूंढ नहीं रहा हूँ। तो उसने कहा हाँ यार ठीक, तो आपकी अम्मी को सलाम देना, सब खैरियत। तो मैंने भी ऐसे कर मतलब फ़ोन रख दी। फ़ोन नहीं, वो मैसेज था, तो मैसेज ख़त्म कर दी। मगर यार मैंने किससे भी नहीं बताया, मैं तो शहर को बताया कि यार काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। और आपको भी बता रहा हूँ कि यार मैं तो बड़ी शर्मिंदा हूँ यार कि ऐसे छोटी छोटी बच्चियों से मेरे रिश्ते आ रहे हैं। और मैंने शहर से ये भी कहा कि हमारी बातें चल रहा था, और मैंने उनसे कहा यार मैं इस बंदी से क्या करूँ। सही। और शहर यार हंस पड़ी कि उन्हें मैं उस मकसद से नहीं कहा था, मगर वो तो यार वो कुछ और समझ गई थी। मगर यार बड़ी बड़ी शर्मिंदगी की बात है, खुदा ना खास्ता ये कोई सुने। आपको आपकी भाभी को भी मैं ये नहीं पता है कि यार मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि ये बड़ी बुरे हालात है यार आजकल मेरे। मैं तो 30 का बंदा हूँ भाई, मैं बुजुर्ग हूँ। और ये छोटी छोटी बंदियां से हमारे क्या ताल्लुक भाई? जी जी। बंदे वो बंदे का मुझे You're breaking up, bro. Just while I get Karsh back, यार कर्श की भाभी के लिए आई रियली अपोलोजाइज फॉर ऑल दिस शिट यार। लाइक वाकई में मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, एंड आई रियली होप दैट दिस काइंड ऑफ शिट डिडंट हैपन टू मी, और ऐसी कहानियाँ नहीं थे। मगर यार वाकई में काफ़ी नाजुक सूरत हाल है, और मैं वाकई में काफ़ी शर्मिंदा हूँ। मगर माफ़ कर देना हम सफ़र यार। और ये भी आप जानो हम सफ़र, जानो आपके अलावा कोई नहीं मेरी ज़िंदगी में, वाकई में। ना थे, ना है, ना होंगे। Yo, Yo. bad day with the internet, eh? I think it was mine on this time. नहीं, I नहीं, just कोई came back inside. कोई फर्क I नहीं just पड़ता। reset it to Wi-Fi. हाँ जी। तो हम थे कहाँ? But हाँ यार ये रिश्ते की बात हो रही थी. But no, that's really upsetting, man. You know, कि हाँ मैं तो कि नाराज़ ऐसे नहीं भी हुए, लोग सिर्फ हैं। शर्मिंदा हुए यार। हाँ रे यार ये काफी sad चीज है, bro. But क्या but you चूतिया know पे चल रहे that's ना मेरी ज़िंदगी में। बेशक यार. पर यार जो आपने ये उसके बारे में बताया, bro, you know, एक जमाना था जब मैं काफी शॉक्ड होता ये सुन के, you know. जी जी। एक जन्नती औरत but और एक जहन्नमी इंसान। हाँ बिल्कुल यार. पर अभी इतना कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगता when I think about it, you know. क्यों? पता नहीं यार. I mean, I feel like I've seen everything at this point, you know. हाँ मैं तो सरप्राइज ही नहीं हूँ, सही है। ये वही like nothing like shocks me anymore, जी you know. जी, सब चलता है भाई, ये तो दुनिया है, सिर्फ दुनियादारी है ये बिल्कुल. यार। और उसकी बेटा भी है, तो मैं हमेशा लाइक एवरी टाइम आई टेल हिम गिव माय रिगार्ड्स टू योर फैमिली। मैं तो बातें कर रहे उसकी अम्मू अभी, सॉरी अभी अम्मू अब यार मैं क्या कह रहे अब अब्बा अम्मी की बात में बारे में। मगर उसकी खुद की ख़ानदान है भाई, तो मैं भूल जाता हूँ कभी कभी कि हमारे उम्र की बंदे का भी खुद का बेटे है।
But bro, but ये crazy scene है यार, you know. जी जी. मगर यार बंदी अच्छे थे यार, कि मेरे भी उससे काफ़ी अच्छे ताल्लुक था. सिर्फ एक बड़ी गलती की उसने ज़िंदगी में, उसके अलावा तो बंदी काफ़ी ठीक है. पर यार आपने तनवीरा के साथ सीन यस क्यों नहीं किया ब्रो? ओ भाई ये, हाँ अभी ऐसे पूछ लो कि आप तो मेरे साथ नहीं थे. मगर यार बात यह है ना कि मैं जो आप गायब हो, अभी कॉल ड्रॉप हुआ है ना, तो मैं सिर्फ पॉडकास्ट के लिए बताया था कि मेरे लिए ना ये, और सिर्फ ये जवाब है मेरे लिए, जो आपकी भाभी के अलावा ना कोई थे, ना है, ना होंगे. माशाल्लाह ब्रो, वाकई. और यार तनवीरा, क्या मेरी बात है भाई कि मतलब बुरा ना मानो कि मैंने काफ़ी बार कहा है मेरी वालदा से, और यार वाकई में ये मेरी लाइक डोंट टेक इट एज यू नो माय सेल्फ ऑब्सेशन और माय वैनिटी. मगर यार एक बंदी के अलावा जो भी मेरे साथ खड़े होते हैं ना, मुलाजिम लगता है. ये मैं समझ सकता हूँ ब्रो. यार साथ नहीं दे दो, बुरी बात है. पर नहीं यार, आपने बेचारी को चेची बना के छोड़ दिया ब्रो. नहीं यार भाई, वो तो मैं था ही नहीं. वो खुद आ गया, खुद बातें कर ली, और मैं था ही, मुझसे बातें ही नहीं की. वो अपने ख्वाहिशात बता दी, तो मैंने कहा यार मैं तो यहाँ है नहीं आपको लेने के लिए. मगर यार बात यह है कि यार आप इतना समझो कि एक तो बात आपके साथ पड़ा था, बंदी तो उतनी रिमार्केबल भी नहीं है. दूसरी बात यह है कि यार इतनी हराम की हरकतें होते हैं कि उसकी ख़ानदान पूरी शराबी ही निकले. और यार आजकल मुसलमानों की ये हालात है. और मैं किसी को, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, मैं किसी को जज नहीं करता. मैं तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट जज यूँ बैठा है, मगर जज तो करता हूँ. बट लाइक बात यह है कि यार मैंने वालदा से भी कहा, जिस तरह की बंदी आपका जो भाभी है ना, उसकी बाद यार मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता. कि यू नो इफ़ यू हैव अ रीज़न, और इफ़ यू हैव हाई स्टैंडर्ड्स एंड यू नो समबडी हु मीट्स देम, तो उसकी बाद यार ये सब देखने से कुछ नहीं होता, कोई असर ही नहीं पड़ता. इट्स लाइक there's this I don't know who it is. There's this actor, I think it's he's one of the, yes, Steve McQueen or somebody like that. He used to say, you know, the reason he doesn't cheat is because why would you go out for a hamburger when you have steak at home, you know. तो मुझे यही लगता है भाई. एंड बिल्कुल. और यार वो बंदी और वो ताल्लुक और वो रिश्ते मेरे यार ज़िंदगी में वो सिर्फ एक है. सही, मेरे ऐसे 100,000 आए हैं, और सब की सब मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं वो तरफे गया ही नहीं. मगर यार पता नहीं यार कि मैं कहूँ भी क्या, कि आपको तो पूरे हकीकत पता है कि कितने रिश्ते आए थे. मगर एक दिन ना मैं ये सब इरेज करूँगी भाई, बेशक, कि कोई दलील होना ही नहीं चाहिए. ऐसे रिश्ते भी आए थे, मैं तो शर्मिंदा हूँ कि आप कैसे सोच सकते हैं ये सब. मैं कैसे आपकी, मतलब मैं आपकी औकात की बाहर इतना हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते. अपॉलजीज फॉर हाउ pompous I sound. Oh my god, dude. But हाँ bro, आपकी जोड़ी सही रहती है यार वैसे, you know. आप तो मुझे यार मतलब शुक्र अदा करता हूँ मैंने रोज़ा नहीं रखे है अभी. मगर यार वैसे बेहतर है. इससे पहले भी पहले मुझे लगता था आपका और जोया का सीन बनेगा. ओ भाईजान, अगर यार जोया के मुझे पता है नहीं कि लास्ट नेम क्या है, कि मुझे आज भी मैंने माफ़ी नहीं मांगी यार बंदी से. और पता नहीं कि बंदी की लास्ट नेम क्या है. अब्बू से भी मिला था, हम अब्बू काफ़ी नाराज़ थे. अगर वो अब्बू आज मुझे मतलब रिश्ते लेकर आते हैं ना, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि यार 20 साल पहले मैंने बैट से मारा था आपके बेटी को, आज आपको मारूंगा. ब्रो जोया खान पता नहीं क्यों आ रहा है यार. हाँ, मगर यार अच्छे नहीं लगता था कि काफ़ी, मतलब जो पश्तून है काफ़ी खूबसूरत लगते हैं नॉर्मली ख़वातीन. मगर ये पता नहीं यार हमारे टाइप की नहीं था. काफ़ी गोरे थे, उसके अलावा कुछ नहीं था. पता नहीं क्या नाम था यार, मुझे भी नहीं पता. जोया वैसे काफ़ी बेसिक बिच नाम है.
पर आप तो सीधा BDSM पे चले गए थे यार, you know. भाई आप तो you're in the mood today, यार बंदी का मैं क्या कहूँ, लाइक मुझे पता नहीं कि शुक्र अदा करता हूँ शी आई थिंक लाइक शी वाज कमिंग अप टू टॉक टू मी, और यार बेहतर ये था कि मैंने बैट से मारा, मुझे उससे वो बात करने ही नहीं था. वैसे यार आपने और वेद ने ऐसे अटैक टीम किया था यार, you know. भाई It was like भाई इल्जाम वेन का है, लाइक कौन बाउंसर बोल करता है भाई, कौन, वो भी लेग साइड पर. हाँ यार ये वो भी यार, हाँ वो भी अलविदा पार्क पे बाउंसर, you know. ओ भाई It just wasn't the delivery. भाईजान मैं तो सोच रहा था कि मेरे ना जो बैटिंग रिकॉर्ड है, मैं अक्सर ज़्यादातर बोल्ड नहीं होता था, सही तो ना मैचेस में तो नेट्स में तो होते होंगे, मगर ज़्यादातर मुझे बोल्ड करना काफ़ी मसले थे. मैं सिर्फ एक बार क्लीन बोल्ड हुआ है, और वो अलविदा पार्क में, और वो मैच की पहली बॉल, और मैं फेस कर रहा था और आपकी था भाई. मैंने ना आज तक वाकई में मैं वो बॉल देखा ही नहीं, जब तक मेरी बैट मतलब नीचे गया ना ये ब्लॉक करने के, मेरे स्टम्प्स तो हवा में थे यार. वो बॉल ना उसकी उसके अलावा मैं अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनली बोल्ड ही नहीं हुआ. आप एक वजह है कि मेरी परफेक्ट रिकॉर्ड टूटने के. भाई ये क्रेजी है क्योंकि आमतौर पे मुझे सारी चीजें याद होती हैं, पर ये विकेट मुझे बिल्कुल याद नहीं यार कि भाई ये भी हुआ था. मेरी जिंदगी का कैनन इवेंट है भाई. मेरी जो भी मतलब जो भी क्या कहते हैं कि मेरे जो ईगो थे ना पूरे खत्म हो गए भाई, कि 2 महीने के प्रेपरेशंस थे उस मैच के लिए. मैंने इतना कुछ प्लान की थी और सब बर्बाद हो गई भाई. मैं तो पहले बॉल के बाद मैं बाहर बैठा था, कुछ कर ही नहीं सकते थे. मेरी इतना मतलब क्या बताओ यार, बेइज्जती किया आपने कि मैं 2-3 महीने मतलब बैट पिक करने में मेरी मसला था. नहीं याद ना करे क्योंकि ऐसा यार इक्वली इसके इस सेम लेवल की बेइज्जती मेरी तब हुई थी जब मैं यार रोज की तरफ से ओपनिंग बॉलिंग कर रहा था. जी जी. और आप और अदनान यार लिली की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन थे जी. और हमने तो यही सोचा था कि यार पहले ओवर में तो नहीं तो दूसरे ओवर तक तो आप में से एक को तो उखाड़ ही लेंगे, जी जी. कोई भी बैट्समैन 2 पूरे ओवर तो नहीं टेक पाएगा हमारे शॉर्ट ओवर फॉर्मेट जी में. जी. पर उस गेम जो मेरी धुलाई हुई यार, आप लोग पता नहीं क्या खा के आए थे उस समय, पर हर तरफ हम लोग की मतलब बोर्ड हो गई थी, एंड मुझे मेरा ख्याल है कि हमने पूरा मैच आप दोनों नॉट आउट रहे थे. जी जी नॉट आउट थे वो ना. मगर क्रेजी हो गया था यार हमारे तो आई थिंक वी कॉल इट इक्वल ऑन दैट, यू नो, कि मेरे भी हुए आपकी भी हुआ, सिर्फ अदनान बच गए. मगर यार एपिसोड तो ख़त्म होने वाले है, और इसकी क्या नाम रखो भाई? यार वैसे we did a whole world tour with this. Yeah, ये तो होते रहते हैं. हाँ, क्या करें यार इसका पता नहीं. हम तो शुरू की थी मिनिमलिज्म से, फायर से, और ख़त्म हो गई यू नो बेइज्जती पर. तो जिंदगी जैसा ही बड़े बड़े प्लान्स बनाते बंदे आखिर लुल कुछ नहीं कराते. Oh bro. यार पता नहीं वैसे क्या कहें इसका, क्लीन बोल्ड कहा जा सकता है इसे. ओ भाई आई लाइक इट. तो अगले एपिसोड में मिलते हैं. मगर दिस हैज बीन द कार्शन एफएस शो सीजन 3 एपिसोड 7 क्लीन बोल्ड. We'll see you in the next one.